मुस्तफा की टीम जीत चुकी है फुलके के साथ। मुस्तफा कितना एक्साइटमेंट था। मुस्तफा द ओनली वन जो साउथ अफ्रीका को बैक कर रहे थे थ्रू आउट का बिफोर द टूर्नामेंट। काफी हमारे रेप्यूटेड जर्नलिस्टों के साथ भी घस लिए थे मुस्तफा भाई के। भाई डीकॉक नहीं लिए थे कोई, पर मुस्तफा भाई उनके वर्ल्ड कप के 11 में डीकॉक को भी लिए थे, मार्करम को भी लिए थे, हेनरिक क्लासन को मैं याद दिलाया तो लिए थे हेनरिक क्लासन। बट मुस्तफा, हाउ significant is this win first of all for South Africa? सेकंड, कितनी इंपॉर्टेंट टीम हो गई है ये वर्ल्ड कप में? आई मीन मैसिव। आप देखो लाइक जैसा हम लोग खेल रहे, मजा आ रहा है। दैट्स द मेन थिंग। मैं सबसे एक्साइटेड साउथ अफ्रीका गेम में हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट द वे दे प्ले क्रिकेट, दे हैव अ लॉट ऑफ फन इन देयर क्रिकेट। आप देखो बैटिंग वाइज क्विंटन डिकॉक जो मारा आज, हेनरिक क्लासन, ठीक है थोड़े इश्यूज है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर, मगर अभी जो क्रिकेट खेल रही है द बेस्ट टीम। ये चेसिंग द टारगेट आरबीटी फैज वाज बैकिंग बांग्लादेश इन दिस वर्ल्ड कप, आई वाज बैकिंग साउथ अफ्रीका एज द डार्क हॉर्स काइंड ऑफ टीम। एंड आप बोलेंगे साउथ अफ्रीका डार्क हॉर्स कैसे बोल रहे हैं आप? हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि नेदरलैंड से हार चुके हैं ये टीम 2 वक्त। आई मीन लास्ट वर्ल्ड कप ट्रेडिशनली भी आप देख लो चोकर की टैग है उनके हेनरिक पास। नोकिया नहीं उन लोग के पास, उनका कैप्टन इंजर्ड है, दैट्स प्रॉब्ली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन भाई बहुत एंटरटेनिंग टीम है। व्हेन दे आर ऑन सॉन्ग देयर इज नो वन लाइक देम। डिड यू एक्सपेक्ट हेनरिक क्लासन टू बी लाइक दिस क्विंटन डिकॉक? वी डिडंट एक्सपेक्ट इट। आई मीन मैं बोला था, बट आई एम रियली हैप्पी दे आर डूइंग इट, लाइक द वे दे वर। आई थिंक 100% आई एग्री विद दिस। दे आर मोस्ट एक्साइटिंग टीम। दे आर मेकिंग अ फ्लैट विकेट लुक लाइक अ फन एंटरटेनिंग गेम। वानखेड़े की जो सिचुएशन थी 2 बार कर चुके वानखेड़े पे 399 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आज जो तरीके से बैटिंग करे यार हेनरिक क्लासन का, मुस्तफा भाई आप बहुत अच्छा एनालिसिस करा आज कि उसके जो पट है, जो पट से उन्हें मार रहा है, जो ताकत है उसके बारे में थोड़ा आप बोलो। हाँ नहीं, मैं ये नोटिस करा था। आई थिंक दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट बिफोर। उसका अगर आप देखो, एबी डिविलियर्स इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन दैट वी सीन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, राइट? उसका ट्रिगर मूवमेंट रहता है, उन्हें या तो बैक फुट पे जाके कट मारता, या स्वीप मारता फ्रंट फुट पे आके, या आगे बढ़ के उन्हें सीधा मारता। क्लासन डजंट मूव। उसके पैर देखो आप, ही डजंट मूव। उन्हें एक इट्स ग्लूड टू द क्रीज, थोड़ा सा हल्का सा फुट मूवमेंट रहता, बट ही डजंट गो टुवर्ड्स। और हमें वो क्या सिखाते एकेडमीज में? मूव योर फीट, राइट? देयर इज नो फुट मूवमेंट। पैर हिलाओ, डंडा मारते पैर हिलाओ। इन्हें हिलाता है नहीं भाई, पैर नहीं हिलाता है। एंड हिज शॉट्स ब्रो, इट अलाउज हिम टू हिट दो सिक्सेस ऑफ द बैक फुट, बिकॉज वो गुड लेंथ डिलीवरी से। अगर आप देखें स्पिनर्स को जो मार रहा है उन्हें, नॉर्मली आप फंस जाते हैं एज अ बैट्समैन, बिकॉज आगे जाके यू गेट स्टम्प्ड, और यू गेट थोड़ा सा कंप्लीट बैकफुट पे जाते, बट बिकॉज ही स्टूड स्टिल, हिज हेड पोजीशन इज स्टिल, इट अलाउज हिम टू स्मैश इट कंप्लीटली। एंड इट्स समथिंग दैट आई हैव नॉट सीन। लाइक लास्ट बॉल बेस्ट बिफोर सीधा छक्का मारा था, छक्का देखा आपने, रुकता, इट वाज लाइक अ यॉर्करिश काइंड ऑफ फुलिश काइंड ऑफ डिलीवरी, बट उन्हें जो टू एंड ऑफ द बैट से उठाया, मैं बोला भाई ये बंदा स्पेशल है। एंड ही हैज बीन इन फिनोमिनल फॉर्म, नॉट जस्ट वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका को काफी मैचेस पूरा साल। डीकॉक की री-एंट्री, डीकॉक का लास्ट वर्ल्ड कप, द वे ही इज बीन प्लेइंग फैंटास्टिक क्रिकेट यार। वो इसको आई थिंक कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा, बिकॉज़ उसका फॉर्म नहीं दिख रहा था डीकॉक का, बट क्विंटन डीकॉक क्या रिजुविनेशन बोलो या रीबर्थ बोलो, बट जिस तरीके से शॉट्स खेल रहा, ही लुक्स मोर कॉन्फिडेंट। India South Africa probably now for me is the game to watch. Yeah, 100%. लेकिन साउथ अफ्रीका का यही है, look if I just talk about the negatives quickly, फील्डिंग में इश्यूज होते हैं उन लोगों को, ड्रॉप कैचेस होते हैं, डेथ ओवर्स में प्रॉब्लम होते हैं, एंड विद द बैट अगर यानसन आउट हो गया फिर क्या, ये तो इश्यूज रहेंगे, राइट नाउ दे प्लेइंग हाई रिस्क क्रिकेट, बट इट्स सो गुड टू वॉच। सो दीस आर द थिंग्स वेयर इंडिया कैन एक्सप्लॉइट अगेंस्ट देम। लेकिन आप सॉरी बोल रहे थे क्विंटन डिकॉक के बारे में, राइट? क्विंटन डिकॉक ब्रो, यू रिमेंबर द 2021 जो कोविड वाला आईपीएल था, उसमें ही वाज द अनसंग हीरो। हर मैच में उन्हें 70-80, he was in everyone's fantasy team, but like limelight में नहीं आ रहा था, everyone was talking about Sky, Rohit Sharma and everything, but he was consistently getting runs. He knows how to play on Indian pitches, उसको बहुत experience है, and in general he is a proper shot maker, and he knows how to construct an innings. And the main thing I like about him, उन्हें he knows how to accelerate. Normally openers थक जाते हैं और they lose their wicket, but this guy, he's worked on his fitness, he's had issues before, he's worked on his fitness, और उन्हें जो accelerate करा आज भाई, साकिब को जो धोया 40 ओवर के बाद, साकिब भाई बुखार में लड़ गए, तो वापस बुखार में चले गए। आप अगर पहले 20 ओवर आप बोलेंगे ये क्या बोरिंग गेम है, सिंगल डबल ले रहे, 2 विकेट चले गए, एक रन वाज 4 runs in over. He knew the back of his mind, because he made a mistake in the last game. I'm going to rectify this mistake. आज मैं पूरा conditions देखूंगा, I'm going to play every single bowler, I'm going to see where I can target, and then I'll start hitting. Slowly started finding gaps, slowly started finding the boundary, and then जब 100 के बाद उन्हें जो he launched, he just went straight into Bangladesh and destroyed them. बहुत अच्छा है South Africa coming together. I mean बबूमा नहीं खेल रहा, जैसे मुसाब वाला blessing and scat. एडन मार्करम आपके जो बीच में होल्ड अप कर रहा, 60 रन बना रहा, he's carrying up that momentum, कंट्रोल में रख रहा। आई थिंक साउथ अफ्रीका वेल, बट यही प्रॉब्लम है साउथ अफ्रीका की, ट्रेडिशनली वी सीन देम या तो सेमीफाइनल में चोक करते, या ऐसे कोई टीम जैसे नीदरलैंड्स हाल में हार गए। अब अभी जाके इंडिया के अगेंस्ट जब उनका क्लैश होगा इन ईडन गार्डन्स में, सो इट बी अ फन एनकाउंटर टू सी देम।
play at Eden Gardens. But South Africa, again, as of now, उसमें टॉस की जरूरत ही नहीं रहेंगी वो मैच में. हाँ, इंडिया इज जस्ट बॉलिंग एंड देयर बैटिंग. दे विल डू व्हाट दे वांट. यू डोंट नीड टू डू अ टॉस फॉर दैट गेम. मगर यही है, आप जो साउथ अफ्रीका लोग बोल रहे हैं कि दे कांट चेस, इंडिया का भी यही है, वी डोंट नो हाउ दे विल बैट फर्स्ट. तो द थिंग इज विद साउथ अफ्रीका वी हैव प्रूफ इन द पुडिंग दैट दे लॉस्ट टू नेदरलैंड्स चेसिंग, बट विद इंडिया वी स्टिल डोंट नो. तो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू सी. बट what these guys are doing, which other teams like Pakistan, Australia and stuff are not doing, they're playing to their strength. South Africa is saying, we don't care, we want to bat first. They'll qualify. Once they qualify, they'll say, bhai, okay, let's test our bowling. Let's bowl first. Let's, chase. India will say, let's bat first. Magar pehle kya qualify karna? How do you qualify? Play to your strengths. You don't care about the opposition. India is not looking at Pakistan. They're not looking at England or anything. They're saying, bhai, apna strength kya hai? Chase. South Africa would apna strength hai, bat first. So they're continuing that until they can. And then when the, push comes to shove, then we'll see what. I think that is the toss that will probably be where both the teams might try to go and experiment कि अपने हम लोग चेस करने नहीं, हम लोग आज पहली बैटिंग करेंगे and probably में भी वो मैच में आप देख सकते हैं. बट bowling was very good up until the 6th-7th wicket. उसके बाद closing down अपन देखे काफी प्रॉब्लम हो रहा था. रबाडा भी बहुत बेकार डाला towards the end. कोइटले पे काफी they were getting smashed. So that's something, that's an area other problem teams South Africa, and that they exploit. Fielding has not been good. Drop catches जो Lizard Williams का drop catches. So there are certain, obviously every team has certain kind of problems. I mean India, thank God अभी तक कुछ इतना बड़ा गैप नहीं दिख रहा है इंडिया में. Yes, fielding थोड़ी बहुत कब भी हो जाता है, but not as consistent as Pakistan, as a South Africa. South Africa again, they probably ये छोटी चीजें देखने गए, but the team they're probably very well on their way to the semi-finals. Yeah, और भाई आज एनगीडी ने खेला. आप जो मेंशन करे, Lazard is the one who played today and he's getting the ball to swing properly. उन्हें कैसा bowling करा भाई. So they have a proper squad. It's not like they're relying on one player. भाई Nokia रबाडा था तो मैं बोलता खत्म है. Nokia will handle the death bowling. He'll smash it, but they're still figuring out things. But they have players who are stepping up. Jansen and Lazard, the way they started in the power play, they were getting the ball to swing. Jansen is getting the extra bounce. You saw how he set up what's his name, Tanzeed Hassan, the way he set him up, offside खिला के full खिला के short ball डाला. शंटो आपका favorite player, उन्हें उसको first ball पे निकाला मार्को यानसन, right? Like the way he got him out, it was down the leg side, but it's that extra bounce which is getting the batter वो glove लग रहा, and it's causing problems. And I think the way they started in the power play was brilliant. The power play bowling has been really good. I think ulta hai, India is finishing off games very good. South Africa is starting games very good. Exactly. So I think that's where it'll be a good contest between the two sides. मगर अभी तो South Africa, despite the Netherlands loss, भाई they didn't let that bog them down कि भाई चलो we keep attacking, मारते रहेंगे, फोड़ते रहेंगे. और आज जो बैटिंग करा तो और क्लासन तो मेरा फेवरेट प्लेयर है भाई. 183 की स्ट्राइक रेट यार, 183 की स्ट्राइक हर जगह मारा. ऐसा देखो, मैं को ये पूछना था तुम्हारे से, because this chapter is interesting for me. Klassen has all the shots in him, and you see how Surya is similar kind of a player. Again, he doesn't have that probably capacity, but where do you think Surya lacks when you compare him to a Klassen? Because Klassen consistently is getting have you seen Klassen play the lap shot? The lap shot? The lap, he doesn't really play that, right? He doesn't play. He's playing full cricketing shots. So he's playing in the V, so he's taking less risk. It looks like भाई ने risky है. मगर आप देखो जब zone में नहीं रहता उन्हें single भी निकाल रहा. Even if it's the last 2-3 overs. अब Surya and other players, even AB, they look to hit a shot every single delivery. He's not doing that. He's saying when it's in the arc, it's out of the park. So when it's in his zone, that's associated with Miller also, that tagline. But with Klassen, it's like मेरा जब स्ट्रेंथ पे आएगा then thing, and the reason he's so good against spin, yes, it is because of his foot movement is like very minimal and it's all hand eye coordination, और उसका head still है. सूर्या का सर कभी इधर जाएगा उधर जाएगा तो थोड़ा सा they're different players, and it's not like Surya will also be very effective because AB was a player like Surya, so they're very completely different players if you look at it. He's playing more cricketing shots. You'll hardly see him play ऐसा shot या वैसा. आप कभी देखो shuffle करके, like आज तो मैंने देखा, maybe England के खिलाफ एक shot खेला होगा, but that's the thing, his head position is still and he's playing to his strengths. Yeah, and like ये मसला foot movement के बिना होते clear कर ले रहा हूँ, boundary foot movement करना शुरू करा तो क्या होने वाला है. And then first you can tell us more about it. There's a lot of leg work, वो जो leg day करते नहीं जिम में, that's what it is. Squats करते वो जो quarter steps, yeah, because power यहाँ से नहीं कर रहा. You know, we always think that you need power in your arms, but in cricket it's the legs. It's the shoulder and the thighs. ये ज़्यादा core आपकी जब tight होती है, इससे आप जब weight generally आप जिम में उठाते हैं, आप legs ही tight करते हैं, core tight करके खींचते हैं. So वो हिसाब से अगर आप देखो तो that is where, and वो natural है, खुवत ही. I'm not lying. पाकिस्तान की bowling physio या bowling coach, sorry, he loves South African, भाई उसके legs इतने बड़े, तो खुवत ही ताकत है. वो ऐसा नहीं है कि you can just get it, आप जिम में जाके कुछ supplement ले लो, नहीं. It is something that comes natural to South Africans.
they're generally very strong. डेविड मिलर को देख लो भाई, आप उन्हें भी क्लियर करना बैठा तो कैसा क्लियर करता, एडन मार्क्रम कर रहा है, तो जनरली इन लोगों की जो जेनेटिक्स है काफी अच्छी रहती है। बांग्लादेश के हिसाब से भाई इतना ही बोलूंगा, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी दिस अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम। दे डोंट स्टिक टू द विकेट, दे थ्रोइंग देयर विकेट्स अप फ्रंट, कॉलिंग प्रेशर, मिडिल ऑर्डर संभाल नहीं पा रही, तो देयर नॉट, आई वोंट से इनएक्सपीरियंस्ड है ये टीम। यू नो शाकिब अल हसन हैज प्लेड अ वर्ल्ड कप, मुशफिकुर रहीम हैज प्लेड अ वर्ल्ड कप, देयर आर few people that have already played, मुस्तफिजुर हैज प्लेड अ वर्ल्ड कप, बट द प्रॉब्लम विद बांग्लादेश इज इनकंसिस्टेंसी। यार आप लोग कितनी बार बोला, देयर आर वेरी गुड टीम ऑनेस्टली, जब अगर देखने बैठे कभी कभी बांग्लादेश बहुत अच्छे क्रिकेट खेलती, बट यही है कि भाई आप ये सिचुएशन में 2 for 36 थे, दे कुड हैव एडेड मोर प्रेशर बट दे डिडंट ऐड प्रेशर, दे बहुत इजीली लूज डिलीवरीज, लेंथ नहीं मार रहे थे। मालूम है यू कांट टेक, जैसा यू नो बाबर भी थोड़े इंटरव्यू में, फ्लैट विकेट को हम लोग एक्सक्यूज नहीं लेंगे, बट फ्लैट विकेट है, बट आपको लेंथ हिट करना है, फिर भी यू हैव टू हिट द लेंथ, यू हैव टू हिट द लाइन, जो बांग्लादेश फेल करे। एंड दे गॉट 3 गुड फिनिश, शरीफुल जो बॉल डाला, आई थिंक इट वाज वो रेजा हेंड्रिक्स को जो बॉल करा, वो बहुत पीछे पे डिलीवरी था, वो कैसा डिलीवरी था वो समझ में नहीं आया, इट वाज लुकिंग लाइक शेपिंग आउट एंड सडनली एकदम से अंदर घुसा, तो दे हैव द टेक्निकल एबिलिटी, बट बांग्लादेश का यही प्रॉब्लम है कि बॉस लाइक दे आर नॉट कंसिस्टेंट, दे गेट ओवरवेल्म्ड एक बड़े कंपटीशन में। They like Mustafa said, like South Africa के लिए they should play to their strengths, but they just get cooped up, and या साकिब भाई को तो आज फोड़ के रख दिया यार। अगर आप देखो like you said they started off brilliantly, मतलब perfect start था। It's also a combination of South Africa, there was very little margin for error ये pitch पे। I think South Africa had the advantage, England के खिलाफ खेले, so they knew exactly कब attack करना है, और if you see it was going 6 runs and over, 5 runs, 4 runs and over, slowly build हो रहा था वो। 40 ओवर के बाद वो मैचअप आ गया, साकिब is bowling, Quinton is batting, he's like I'm going for it, that over changed everything, and then जो मारे भाई, oh my god, वहां पे बीमार हो गए थे सारे, तुम का नारा मारे उसको तो लाइक साकिब को, फिर उसके बाद क्विंटन डी कॉक आउट हुआ, फिर इन्हें क्लासन मारना शुरू करा, क्लासन खत्म करा, मिलर मार रहा था, एंड या दे जस्ट देयर वाज नो मार्जिन फॉर एरर टुडे, एंड इट वाज ग्रेट बैटिंग। क्विंटन डी कॉक कुड हैव गॉट अ 200 इजीली टुडे मैन, द वे ही वाज बैटिंग 100%। सोचा भी था 170 जब था, आई थॉट अरे आज तो 200 मारेगा, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो you don't get everything, but आगे जाके टूर्नामेंट में और भी occasions आएंगे, और भी probably they'll play in a more flatter area like Delhi. I think they've already played in Delhi. Yeah, they played. But yeah, I think you know overall South Africa right now is the team to watch. Yes, India is at home, that advantage is there. They're playing phenomenal. Turning track बना देते हैं उसके खिलाफ। India is playing phenomenal cricket, but when you look at South Africa coming from the side, I'm pretty sure India वाले देख रहे होंगे, very eagerly India देख रहे हैं कहाँ ये लोग घट रहे, and they're probably doing their analysis in each and every match. Yeah, because if you see, I'll tell you, I think New Zealand are a better team than South Africa on paper, right? Yeah. But South Africa are a dangerous team, right? 1 minute up, 1 minute down, जो पाकिस्तान को associate करते हैं, South Africa वैसी है, so they're dangerous, and especially in the knockouts, you wouldn't, yeah, you say choke करते, but this team is looking very dangerous. And they're out to put a fight. They're out to put a fight. वो फर्क है। और उन लोग बोल रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा खेलने वाले हैं, even if they do a turning track, I was thinking India will it might be a turning track, they might suffer, but they have Klassen who can play spin really well, they have Markram, Quinton de Kock play spin well, and then they have Shamsi in the wings, he hasn't played yet. Yes. I'm not saying he's the greatest you know China, but फिर भी he is an option that they have, वो आके उसको भी खिला सकते हैं। और bowling में मेरे को ये कोटसी भी बहुत अच्छा दिख रहा है, 143 144 good pace man, extra bounce भी मिल रहा है उसको, and he's bowling really well. Mumbai तो is becoming his favorite wicket, and particularly you know it's such a good ground to chase, but South Africa they've done this in 2 games back to back, that they've taken the total out of the reach, तो परेशान हो जा रहे। यही है आई थिंक टैक्टिक जो आप बोले, जस्ट ऐसा कोई मारो जो भाई देख के स्कोरबोर्ड पे फट जाना, तो फ्लैट विकेट भी आपको मूविंग विकेट दिखना शुरू हो जाना। और आप अगर देखो इंग्लैंड का अप्रोच अलग था, उन लोग बोल रहे थे कि बॉल 1 से मारेंगे, बांग्लादेश उल्टा अप्रोच करे, जो मैं चाह रहा था कि दे डिडंट लूज विकेट्स इनिशियली, बट देन दैट प्रेशर स्टिल बिल्ड्स, इनएविटेबल है वो 350 360 आपके बोर्ड पे। बट शाउट आउट करेंगे यार महमूदुल्लाह की इनिंग्स को, आई थिंक वेरी गुड इनिंग अंडर प्रेशर। डिले कर दिया सबको आज हम लोग भी बाहर जाना चाह रहे थे, सोचे कि भाई 100 रन्स पे ऑल आउट हो जाएंगे, वील ट्राई एंड गो, यू नो थोड़ा बहुत बाहर जाएंगे, मुस्तफा भाई बेचारे हमारे प्रिजन में बैठे हुए, बट मोहम्मद भाई अगर आप देख रहे हैं, आप हम लोग को बिठा के रख दिया, बट सेंसेशनल बैटिंग, सेंसेशनल शॉट, स्ट्रोक प्ले ब्रिलियंट, he was enjoying his moment, he took his time. South Africa made a lot of mistakes, वो भी एक you know lifeline दी है उनको no doubt, but he utilized that lifeline. वही होता ना, काफी लोग बोलते हैं भाई lifeline दे दी lifeline, but आप जब utilize करते हो वो lifeline and to such a good extent कि आप 100 बना दिया, and just because of your innings the team gets inspired कि भाई नहीं देखो ये बंदा एक तो खड़ा हुआ है, हम लोग शर्म करना है, and I think that's something that Mahmudullah
सटनली वो मैसेज दे दिया उन्होंने 100 के थ्रू। Yeah, at least there was a fight. ऐसा नहीं हाँ, ये नहीं कि भाई इंग्लैंड में खाली वो मारकूट उन लोग थोड़ा मारे एंड में, मगर कोई फाइट नहीं था उसमें। यहाँ पे लाइक प्रॉपर बैट्समैन के मुस्तफिजुर भी टिक गया यार, वो बड़ी बात, उन्हें भी टिक गया, वहां पे आउट नहीं हो रहा था, तो एटलीस्ट वी सॉ अ फाइट देयर। बट आई जस्ट फील दैट Bangladesh got outclassed by a really good team, a team which is much better than them, and a team that was out hungry, and a team which these conditions suited more. If this game was Chennai, maybe it would have been a different ball game altogether. Shake might have been more in play. Yeah, it's ifs and buts, मगर अपन जो like देख रहे वर्ल्ड कप में, ऐसा मेरे को लग रहा था कि this ground is South Africa's ground. That's why I am scared semi-finals. If they play India over there, it's going to be a crazy match. मतलब बहुत crazy match होने वाला है। पाटा विकेट है वो, बट पाटा पे वही मुस्तफा टैक्टिक बोला ना कि भाई 400 बना के फाड़ दे रिपब्लिक को। और either they're hitting and like against England they were going non-stop, right? But the last 10 overs जो उन लोग मार रहे हैं, they are saying कि भाई आप हम लोग 320 का जो स्कोर है 400 कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम लोग। Last 5 overs today they hit 83-84 runs, which is not a joke, and they did the same thing against England. Of course that's thanks to Klassen. आप बोल सकते हैं भाई what happens if Klassen gets out, but they're not thinking like that. They're saying भाई he's I the problem, but then they have Miller in the back, they have a few backups and Markram है, हाँ वही है, ऊपर से नीचे ले लो, every player consistency काफी अच्छी है। अभी महाराज भी बैटिंग कर ले सकता थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। So everybody is contributing, and that is the main thing I think in this South African team. Yeah, consistency ये तो चल रही है, but again ifs and buts पे आ सकते कि भाई what if De Kock gets out, इधर भी बोल सकते what if Rohit Sharma, what if Virat Kohli gets, there's always going to be that thing, but right now the game to watch is going to be in Eden Gardens, South Africa, India, because again one team is looking much more hungry coming from behind. In India obviously home nation है, we already सराखों पे रखेंगे उन लोगों को, लेकिन it's going to be interesting match। कल है श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच। इंग्लैंड का इंग्लैंड श्रीलंका नहीं है यार, ऑस्ट्रेलिया हाँ ऑस्ट्रेलिया परसों है, बहुत मुश्किल मैच है। ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड, अगर नेदरलैंड एक और कुछ मिरेकल कर गई तो मजा आ जाएगा। ऑलरेडी हमारे भाई ऑरेंज डाल के बैठ गए, तो ही इज सपोर्टिंग नेदरलैंड्स टुमारो, एंड वी हैव सीन व्हाट नेदरलैंड्स डन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। If they're able to do that against Australia, तो हंसी आ जाएंगी। नहीं हंसी तो आएंगी, मगर ऑस्ट्रेलिया अब now this is the time for them to come back. They're looking at it, they sniff blood right now. Mogs रुक जाओ sorry but मैं क्या बोलने वाला था, Australia is sniffing blood right now. England have collapsing, Pakistan are collapsing. It's all about I think Australia right now are saying let's get back into this World Cup, and they will be looking to beat Netherlands by a big margins के साथ, and then that New Zealand on Saturday, if Australia win that, then everything is changing. The whole narrative of Australia coming into the semi-finals will change. So they're looking at it like that. They need momentum, and look, Netherlands have played really good in this World Cup. It's not going to whenever I say Netherlands खेल रही है, but now I don't say that. Power play के dौर अच्छे, Ackerman, Dutt है ना, आके अटका दे रहे बैट्समैन को, they're not able to get a lot of runs, and I think वही है कि भाई नेदरलैंड अगर एक और शॉक कर गई to Australia, it'd be fun to see, but I think Australia कच्चा मार देते क्या उसका। हाँ मेरे को भी ऐसा दिख रहा, कच्चा मार देंगे, and like I said they want to get that momentum. It's about winning tomorrow by a big margin, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड को मारो, फिर आज they're back in the semis. Yeah, and that's where then you start fearing Australia become much more of a dominant opposition. Going into the game आप चेन्नई को भूल जाएंगे, आप सोचेंगे अभी ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर if New Zealand go on a losing streak or something, then it opens it up. Otherwise right now the top 2 looks like India, New Zealand, भी हो गया ना, साउथ अफ्रीका भी है, और साउथ अफ्रीका में अभी भी like you never know till it's so, I'm just keeping them like that, but because even when I see them play, I'm not saying it because आप लोग मेरे को आके गालियां दे सकते हैं when they lose, no problem, because I want them to play well, but it's just the way they play. It is high risk cricket. It is high, that's why I enjoy it, like it's living life on the edge. आके खाली but do you think it's a better balance of risk when you compare it to England? But you can say that, but the thing is last year उल्टा बोल रहे थे, the style is the same, but साउथ अफ्रीका का नहीं चल रहा था ये स्टाइल, इंग्लैंड का चल रहा था, right? और इंग्लैंड जीत गई T20 वर्ल्ड कप, so I would say it's more form more than the style. It's the इंग्लैंड के प्लेयर चल रहे नहीं, साउथ अफ्रीका के चल रहे हैं, सारे चल रहे, तो it's more that because England got a good wicket. अभी ये बोल रहा हूँ कि टेम्बा बाउमा कैसे घुसेगा ये टीम में वापस, बहुत मुश्किल है दिख रहा मेरे को। कैप्टन अच्छा है, but Markram is doing the job right now, right? He's doing the job. But look, Chris Hendricks didn't perform today, right? एक मैच ना, लास्ट मैच तो 85 वही अब मगर कैप्टन is captain. They are backing this guy. Bavuma, I don't know what his deal is. Look, in bilaterals उन्हें actually अच्छा खेलता, अभी उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा खेल रहा था bilaterals में, but वर्ल्ड कप में नहीं करता perform. I don't know what the deal is, but there is something they have in him. It's his captaincy, and also in the end of the day, he's got a strong head as well. He's got a strong head as well. इन्हें जोड़ा पूरे ये प्लेयरों को, Klassen, Miller,
आपके साउथ अफ्रीका का भुवन है उन्हें. Yeah, he's the guy like who is keeping them together. So I think he's still come back. But how does he come back? It's hard, man. It'll be very tough on his hand. Yeah, it will be very tough. And again, like I think Bavuma का वही है, strong है, good mentality. You know, captain's meet में भी आके सो गया था. He didn't really care कौन क्या बोल रहे. मोक्ष भूख लग रही तो you know we'll try and wrap up quickly today. But overall, South Africa is the team to watch out right now. I think New Zealand बोल रहे थे, अभी South Africa आ गई. It's going to keep changing over the course of the next week. Next week तक मालूम हो जाएगा. I think top 4 कौन होने वाले. Yeah, top 4 कौन होने वाले. नहीं, I think अभी और है time because the 4th position is going to keep going up and down. कुछ भी हो सकता है. I think अफगानिस्तान आजादी करेंगे जी. आ सकती है. Right? अफगानिस्तान अगर मार दिए, you know they have to play Sri Lanka, Netherlands, and then I think they have to play Australia. And they've already played New Zealand, South Africa. I think South Africa को फंसा सकते हैं. हाँ भाई, वो भी अगर I don't know, चेन्नई रहा तो मजा आ जाएगा. वो चेन्नई की वही है. और अफगानिस्तान अब देखो, now when trend you slowly seeing trend. Yeah. So you saw Maharashtra turn the ball as well. So when this happens, then Afghanistan will be right in business, man. Is there any update on Hardik Pandya's injury? Nothing yet. Like I didn't find any update on them. Do you think that he's okay, or do you think that they just don't want to? There is a serious problem there, and they just don't want to. See, what we saw initially, if it wouldn't have been that serious, we would have seen him in the dugout. Yeah. But they took him for a scan that shows that it was a serious. It's serious injury. हाँ, तो ये तो है कि भाई उन्हें wobble करा. He tried to run back, but या तो सूज गया होगा उसका एकदम से. क्या होता है एंकल या उसके इंजरी में एकदम सूजन आ जाती. So that is one thing that they. और हम लोग images भी नहीं देखे उसका, right? Walk करते हुए या कुछ. नहीं, when he initially उन्हें बॉल पकड़ा, then कोहली को डालने से पहले उन्हें बॉल पकड़ के tried when he couldn't put weight on his ankle, so he threw the ball down and he went to the dugout. So then विराट कोहली आके जो infamous 4-3 बॉल जो वापस डाल दिए. But right now तो I think precautionary, I don't think I see Hardik. But we didn't see him travel. नहीं, कुछ भी नहीं देखा अभी तो नहीं कुछ भी नहीं. उसको मालूम ही नहीं उन्हें walk कर रहा बराबर नहीं कर रहा. अभी तो we don't know crutches आए क्या है क्या. But the good thing is at least they have a break. They have a break which is helping everybody. Everybody's having fun still in Dharamshala. Then उसके बाद जाएंगे I think इंग्लैंड का लखनऊ. हाँ, कल परसों निकलेंगे शायद. निकल जाएंगे. इंडिया का वो है. Right now, like any particular performances that has impressed you or a particular individual? Klassen तो yes, of course he's impressed me the most because देखो World Cup उसका first है. कहाँ से sudden आदमी आया, nobody knew him. We all just saw him in the IPL. He was phenomenal there. मोक्स और मैं तो live देखे थे जब उन्हें विराट को reply करा था from the bat. I mean it was a 100 नहीं, it was a 50 or 100. But it was fantastic from then, and from then to now अभी तक उन्हें फॉर्म में. अभी तक आप देखो डिप नहीं आया कुछ फॉर्म में. उसके पर्पल पैच बोल दो आप, ऑरेंज पैच बिकॉज उसके बाल ऑरेंज है. बट इट्स बीन फिनोमिनल टू सी हिम बैट. And Quinton de Kock again, one of the other players that I'm very shocked to see that he's performing at this level. Quinton is an exceptional player, exceptional talent. The main thing, he's become more mature now. He has a head on him and he doesn't get as much. काफी देख लिया उन्हें cricket life में. घबरा जाता था, विकेट फेंक देता था. Talent was always there. उन्हें कड़क शॉट खेलता. And I think, like I said, he knows how to construct an innings. And with the maturity, he's improved. He's a very good player of spin. तो यही था कि रुकना भाई, middle overs तक रुकना. आज तो उन्हें पूरा inning खेला. I mean, और खेल सकता था. He could have got to a double 100, but he knows how to accelerate, when to accelerate. He knows which bowlers to attack. He doesn't have that much problem against spin, but off spin का issue है उसको. But he's worked on that. He's improving. There is a he's taking his good time. समझ जा रहा कि भाई किसको कितना क्या करना है, and उसके हिसाब से उन्हें. Because अगर आप देखें, Ackerman got him out in that Netherlands game, but he's worked on that now. Against Sakib, he did not show anything. But again, when it's like a ranked turner, it'll be a different kind of situation. But he's worked on that. That's what I've really liked about Quinton de Kock. And the way South Africa have bowled, I'm really enjoying that. I would like to see, if it's a spinning track, to see Shamsi. उन्हें पिट भी जा सकता, but he is a wicket-taking option that they have. Yeah, महाराज का भी देखना सीन. अभी आज तो जैसा आप बोले turn तो कर रहा था. Even he is also one of the spinners. I think Ngidi भी will be good in crease. Ngidi is experienced. Yeah, he's experienced. He knows how to blow the slower ones. ये वो उन्हें अच्छा wicket taking ability है पूरी South African ball. But again, closing the tail, that's something that South Africa probably need to look into. And fielding is like one big concern हर टीम में right now. Yeah, हर टीम में कोई ना कोई कैच ड्रॉप करा. पाकिस्तान का तो आप देख लिए कल ही बाबर. कल आप देखे वसीम अकरम क्या बोले? हाँ. He got pissed off. Yeah, I forgot the. I'll tell you the line. इन लोग 7-7 किलो नहारी खा रहे. नहारी 8 किलो. हाँ. 8 किलो sorry. हाँ. 8 किलो गोश्त ताकत का है छिक्के मारने के. 8 किलो गोश्त. तो 8 किलो मटन खा रहे थे 2019 में. It was something else that they were eating. Pizza and burgers. ये चीज बोले थे वसीम अकरम. नहीं, वो तो उन्हें बोला था.
अच्छा वक्त या बदल तो गया वो है, हाँ या तो वो मोमेंट वाला भाई, हाँ but yeah, they were very pissed off, man. Like yesterday, The journalist came after him. You saw his post match. The journalist, भाई अगर बाबर should we start? पहले सवाल ये था बाबर बैठते कि बाबर ये सब नजर रखते हुए क्या हम लोग अब आगे उम्मीद रखें या नहीं? This was the first question जो उसको आए. and then what did he हक्का say? बक्का हो गया. He said जी आप हम तो अपनी बेस्ट ट्राई करेंगे. अप्लाई नहीं हो पा रहा. Bobby, जो हम लोग प्लान करें जो अप्लाई नहीं हो रहा. बॉलर्स के ऊपर थोड़ा बहुत उन्होंने बोला कि भाई बॉलर्स आर नॉट बॉलिंग इन द राइट एरियाज. नॉट बॉलिंग. हमारा their target was always 280 290. Anything above 15-20 runs maybe he was short. I find that's BS, Yeah, man. I mean you have to cover the tracks. उसके बाद उन्हें बोला कि भाई अप्लाई नहीं कर पा रहे. फील्डिंग हैज बीन not up to the mark and bowling has not been up to the mark. हमारे bowlers threatening नहीं दिख रहे, which is true. No one is looking scared of Pakistan bowling right now. And no one's looking scared. Threatening also, yeah. उन लोग तो like आराम से खेल रहे. And the main thing is the spinners are pulled rubbish. No variation, भाई nothing. कल तो मदद थी पिच में हम लोग देखे, ठीक है. शादाब तो second spell डाला after he got initial 4-5 ओवर के बाद. और मैं फिर से राशिद का स्पेल देखा, मैंने विकेट क्यों नहीं लिया. And I saw the game and I saw the spell again. He beat the bat like 17 times. He was unlucky not to get a wicket. So like वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था. There was no threat. I'm not saying that the Rashid level or anything like that. नवाज को आप 40th ओवर के बाद ला रहे हो. Like it doesn't make sense. नवाज नहीं, कौन है वो? नहीं कल तो खेला नहीं, बट जनरली नवाज जब अच्छा भी डाल रहा है उसका कोटा खत्म मतलब उसका कोटा खत्म नहीं. इफ्तिखार का कोटा नहीं कर. इफ्तिखार अच्छा डाला. अगर इफ्तिखार वैसे तो इमाद वसीम उन लोगों को खिला देना था. आपके बाद अबरार अहमद कुछ ट्राई करना था. You know people I saw जमान को ला ले भाई. जमान बेटर है डेथ ओवर में. I saw people getting angry. शादाब को कैसा ड्रॉप करे, वाइस कैप्टन है. नवाज को ड्रॉप करना था भाई. कोई भी ड्रॉप कर, तीनों नहीं चल रहे स्पिनर. कोई भी नहीं चल रहा. उसामा मीर हम लोग समझे चलेगा. उन्हें भाई धोती है उसको. उन्हें तो प्रेशर में पटा. there is no consistency in their bowling. They're not building pressure. हर ओवर में 2-3 बुरे बॉल आ रहे, शॉट आ रहा, नहीं तो फुल टॉस आ रहा. वही he was saying कि 4 बॉल 3 बॉल अच्छे होते हैं. फिर ये होता है कि we want to finish the over क्लोज करना है and then उसके बाद 2 छक्के पड़ जा रहे हैं. तो ओवरऑल लाइक बाबर का उससे टेक अवे ये है कि भाई they are under pressure. Guys, this is complete mismanagement. आपको पता है एशिया कप वर्ल्ड कप पे 50-50 ओवर के टूर्नामेंट है, ठीक है. आप लोग बच्चों को पहले एलपीएल भेज दिया, 100 भेज दिए, वो कर दिया, लगातार क्रिकेट खिलाए. फिर आप श्रीलंका भेजे था, लंबा तोड़ था टेस्ट वनडे. वहां पे आप रोटेट नहीं कर सकते थे. आप शाहीन को हर मैच खिलाए, आप नसीम को हर मैच खिलाए, आप हारिस को हर मैच खिलाए. टेस्ट मैच की भी मैं बात कर रहा हूं. फिर अफगानिस्तान के 3 वनडे थे, क्या जरूरत थी तीनों को खिलाना एवरी मैच में? 100%. आप वही है ना, वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर आ जाती है बात. दिस इज वेरी पोर. हम लोग बोलते कि इंडिया अरे खेलना बड़े प्लेयर ये वो, बट इट्स स्मार्ट. शमी रेस्ट करता, सिराज भी रेस्ट करता. लोग दे हैव टू डू दैट. आप ये पूरा यू रैन देम टू द ग्राउंड, दे लुक सो टायर्ड. मतलब पूरा एनर्जी खत्म हो गया बिकॉज़ आप पूरा समर इन लोग को कोई रोटेशन में 11 में जब हारिस रॉफ उनको तो काफी टाइम मिल गया था ओब्लिक इंजरी के बाद. बट या जमान खान को तो भी आप खिला लेना था मोर ऑफ देन व्हाटएवर. भाई आप बीच में खिलाओ, यहाँ एटलीस्ट आप तैयार रखो प्लेयरों को. अभी शादाब का रिप्लेसमेंट ही नहीं मिल रहा आपको बिकॉज़ आप खिला ही नहीं. आप अबरार को खिलाना था अफगानिस्तान के खिलाफ, आप उसको खिलाना था किसी और को, लाइक जो उनका स्पिनर है नोमान को भी लेके आ जाना था. लाइक ट्राई डिफरेंट थिंग्स इफ यू हैड टू एंड प्रिपेयर. दे डिडंट प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप. इंडिया हैव सूर्या रेडी, इंडिया हैव ईशान किशन रेडी व्हेन नीडेड, राइट? दे हैव मोहम्मद शमी रेडी. यू सॉ दैट ही केम ऑफ द बेंच 5 विकेट बिकॉज़ शमी हैज प्लेड क्रिकेट. ही हैजंट प्लेड इन द वर्ल्ड कप, ही प्लेड क्रिकेट. साउथ अफ्रीका have this guy Lazard was ready today. Hendricks was ready. Yeah, that is good backing option, backup option utilize करो. आप रिजर्व स्क्वाड के पुटे हैं उन लोगों को. भाई आपको हेंड्रिक्स मालूम है, मेरे को मालूम है कैसा, बिकॉज़ उन्हें खेलता साउथ अफ्रीका के लिए, बिकॉज़ दे रोटेट द स्क्वाड. यहाँ पे आपको मालूम नहीं उनका कौन है बेंच या डोमेस्टिक प्लेयर्स कौन है, बिकॉज़ कोई खेलता नहीं. इमाम के अलावा, फखर के अलावा कोई खेल रहा ही नहीं. आप तैयारी नहीं करे लड़के को. लाइक इफ देयर इज लुक, हारिस को लेके आए, हारिस को भी नहीं खिलाए. हारिस के भी you can have bad form bro, but like you should have replacements, you should have options. यहाँ पे कोई प्लानिंग ही नहीं है. वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिला रहे हो? वो हारिस और हसन से अच्छी बॉल. वसीम जूनियर भी यार मैं लाइव देखा हूँ, वसीम जूनियर भी पिट चुका है काफी. लाइक देखो थ्रेटनिंग फैक्टर नहीं है. हाँ वसीम जूनियर का आप खिला सकते, बट वसीम जूनियर बैटिंग कर ले सकता. बट वसीम जूनियर भी शॉर्ट लेंथ, ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट इन द फील्ड. आप लास्ट टाइम आप हैदराबाद के वार्म अप में भी देखो, जो फील्ड में सैप हुआ था वसीम जूनियर थे उसमें. वसीम जूनियर काफी पिट चुके हैं इवन इन द वार्म अप. आई थिंक उन्होंने एक आध मैच में खेले भी. मेरा ये है जमान आपके बेंच पे. आई थिंक जमान इज द बेस्ट डेथ ओवर स्पेशलिस्ट राइट नाउ दैट पाकिस्तान. आप एहसानुल्लाह था आपके पास जो बेचारा एशिया कप में एक दिन की फ्लाइट लेके आया, वो भी काम में नहीं. मगर वही यू हैव टू लाइक मुस्तफा भाई सेड, वर्कलोड मैनेजमेंट एंड मिसमैनेजमेंट काफी है हद तक पाकिस्तान की टीम में आप देख सकते हैं. एंड आई एग्री विद दैट कि भाई यू डिडंट नीड टू प्ले एवरीबॉडी इन द एशिया कप. इवन इफ यू वांटेड टू प्ले इंडिया पाकिस्तान में शाहीन को खिला लेते, आप बिठा देते नसीम को. नसीम को इतनी बड़ी शोल्डर इंजरी है, आप लोग एक्सरेज इतने दुनिया की साइंस टेक्नोलॉजी है, आप उसमें नसीम को यू बेसिकली गैस्ड आउट योर
Yeah, that is completely the management's fault. Injured है भाई, unlucky है नहीं भाई, आप प्लानिंग ही नहीं करे. बुमराह को कैसा लेके आए इंडिया, पूरा लिटा के रेस्ट करा के पूरा रुका के he played the Island series 4 overs, फिर एशिया कप खेला, boom into the World Cup. You have to manage the players. जमान खान और हारिस रऊफ दोनों लेवल T20 के बॉलर हैं भाई, जो भी है भाई. लाइक ये भी देखो, मैं इस पे अग्री क्या करता हूं मालूम, आप भाई T20 प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं, आपके there's a big difference. 4 ओवर खिला रहे हैं आप, 10 ओवर खिला रहे हैं. 10 ओवर के प्लेयर कहां हैं आपके जो 10 ओवर? आप हम लोग बोल रहे हैं थके हुए दिख रहे, वो नहीं दिख रहे, बिकॉज़ these guys are too used to playing. habitually नहीं है. Where are the guys? Mohammad Siraj, we are all forgetting, played from Ranchi Trophy. He used to play 4-day 5-day cricket all the time, and then he started his career. उन्हें IPL से नहीं पिक करे उसको Ranchi Trophy से पिक करे. So where is your red ball bowlers? Where is the bowlers who can come and give you 50 overs in a day? Then they can play one day and then T20. ऐसा जाना, इन लोग उल्टा जा रहे. हारिस रऊफ, I agree bro, he is looking like a पेस के ऊपर आप ज्यादा फोकस करें rather than the. हारिस रऊफ की कैसी बॉलिंग थी ऑस्ट्रेलिया में, अपार्ट फ्रॉम द विराट कोहली, जबरदस्त बॉलिंग नहीं थी, जबरदस्त थी राइट. ऑस्ट्रेलिया में अभी उन्हें कैसा लग रहा, फर्क क्या 4 ओवर डाल रहा था वहां पे, यहाँ पे 10 ओवर. और यहाँ पे कोई वेरिएशन यूटिलाइज नहीं करा भाई. उसका अच्छा खासा स्लोअर बॉल बैंगलोर में दिख रहा था, वो भी यूज नहीं करा. धानी बेस्ट बॉलर रहता अगर उनको मौका. आई थिंक धानी तो एशियन गेम भी चले गए, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम था कि बेचारे को आ रहे जा रहे. और एहसानुल्लाह भी काफी उनका नाम सुना हुआ हूं मैं, बट आई हैवंट सीन हिम बोल. दैट्स व्हाट मैं saying. You are playing Shaheen, you are playing Naseem, you are playing Zaman, you are playing Zaman नहीं, Naseem, Shaheen and Rauf. ये तीन के तीन ही आप पूरे साल खिलाएंगे तो ये बंदों को रेस्ट कब दोगे आप? और बंदे फिर PSL खेल रहे, BBL खेल रहे, they're playing all the domestic leagues, all the T20 leagues. मैं समझ सकता हूँ भाई, आपको जितना क्रिकेट है खेल सकते हैं एक्सपोजर, लेकिन देन आप बाकी के ऑप्शन जो इमाद वसीम है बैटिंग में, इमाद कैन बॉल एंड बैट. उसके बाद आपका उन्हें ऊपर ओपनर कौन है, मैं उसका नाम भूल गया, उन्हें है सरफराज हैं, उन्होंने इतना अच्छा खेले डोमेस्टिक, कायदे आजम में फोड़ दे रहे सबको. कैसा खेल रहा है आजम खान है, एक पावर हिटर है भाई आपके पास बीच में. आई मीन जस्ट सेइंग, आई मीन मे बी आप पिक मत करो. बॉलिंग में भी काफी आपको ऑप्शन निकल के. साइम अयूब है, साइम अयूब भी अच्छा था. एंड आपकी जो ये इमर्जिंग कप में जो बच्चे गए थे उसमें तो वसीम जूनियर भी था, बट देयर वाज वन मोर बॉलर. So you have all the option, but like again, it's your rotation of the squad. Nicky Arthur should be questioned कि भाई और आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया. आपका हर 2 सेकंड चेयरमैन चेंज हो रहा है. इन्हें बन गया, उन्हें बन गया. मेरे को आज भी नहीं मालूम कौन है चेयरमैन. चीफ सिलेक्टर इंजमाम को बना जगह अशरफ थे, अब कौन है? इंजमाम को चीफ सिलेक्टर. उससे पहले कोई और था, 2 हफ्ते पहले उससे पहले कोई और था. There is no continuity. Misbah is supposed to be the chief something, or he's still that post, but he's sitting on PV and giving analysis. I don't know what is going on. इफ्तिखार अंजुम भी थे बीच में, इफ्तिखार अंजुम राव भी थे. उमर गुल was the bowling coach. तो क्या काफी मैनेजमेंट चेंजेस तो आप देख सकते हैं. शकील को बाहर करो, वो टेस्ट प्लेयर है, नंबर 5 पर पावर. अच्छा ही खेल दिया. फिर भी मैं बोल सकता हूँ यार शकील को प्रमोट कर दो. आई वुड से रादर शकील को प्रमोट कर दो. आप रिजवान को डिले कराओ. रिजवान को आप 4th भेजिए लास्ट मैच में. I don't know भाई, शकील का तो I feel कि he's a quality batsman. He just needs time. Maybe try to send him out number 3. And इमाम को निकालो, बाबर को ऊपर लाओ. आप ये चीज कर सकते हैं. मोहम्मद हारिस को लाओ, वो बंदा के स्ट्रोक प्ले अच्छा है. I've seen him coming down the track against spinner. He does a lot of practice, but अभी तक उसको देखा ही नहीं आप. हाँ भाई 2 विकेट कीपर हो जाएंगे, but he can outfield. हर प्लेयर तो फील्ड में आउटफील्ड में फील्डिंग कर सकता है. तो it won't make a big difference. It's like Mustafa said, mismanagement, exhausting your players, and that's clearly evident on Pakistan. ये बहाने हैं 8 किलो मटन और 10 किलो मटन यार. ये तो नहीं. Also आप बोलते हैं कि like you can see, there's excuses that can be made. They're playing in a crowd where they don't have as much support. They're playing in India, they don't play IPL. ये सब आप बोल सकते हैं, but bro these are not valid excuses. You're professional cricketer, and it's the same thing. आप रावलपिंडी में खेल रहे हैं और चिन्नस्वामी में खेल रहे हैं, same है. वहाँ पे भी 400 मार सकते हैं, यहाँ पे भी 400 मार सकते हैं. So those are just excuses. We can't make those excuses. In 2012 we watched a series together. Remember India versus Pakistan? Pakistan came after maybe 5 years. सीरीज था ना. हाँ, उसमें Pakistan won that series 2-1. And Junaid Khan, these guys never played in India before. They never played IPL or anything like that. आके boom. So this is not an excuse कि भाई वैसा है, ये है. आप जो भी बोलो, there's a problem in the management and there's a problem in the leadership as well. Now there will be fights also. There will be to get a run यारो. Like वो fielding जो set करते हैं आप लोग, it doesn't make sense. आप एक से single double तो light लेके ले ले रहे. फिर कप्तानी का problem है. आप you're not creating chances, you're not creating pressure on the batter. कुछ भी नहीं है भाई.
fielding मालूम में उन्हें misfielding सिंगल और डबल हाँ, निकाल रहा है, आराम आप से आगे लेके आओ, विकेट का चांस क्रिएट करो, अगर उन्हें मार दिया ठीक है, आगे लेके आपको चेंज करो, फील्ड में कुछ भी नहीं था क्रिएटिविटी. Yeah. So look, if they can still make it to the semi-finals, but it's a very very long shot. They have to लेवल improve. क्वालिटी और साउंड बैट्समैन बोल के शकील को 12 प्लेयर मान रहे हो, बट वो लेकिन देखो बॉस, आप इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, फखर जमान कितना इम्पैक्ट करेगा. कंसिस्टेंसी इज आल्सो की. शकील का जो भी बोलो, ही इज अ स्लो स्टार्टर. he can make an innings out of something. He can build a big partnership. उन्हें कर सकता भाई. उसको थोड़ा टाइम, उसको थोड़ी बैकिंग दो. आप आगा सलमान को ला लोगे, आप आलोगे, ये बोलेगा आगा सलमान को खिलाओ, आगा सलमान खुद पिट के चले जाएगा या खुद उन्हें आउट हो जाएगा. सो कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट. फखर जमान को इम्पैक्ट कब से ही आ रहा है? 2017 के बाद तो फखर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं देखा मैं. उसके बाद आप इमामुल हक को ले लो. इमामुल हक से बेकार प्लेयर में नहीं देखा अभी तक. लाइक ही इज ऑलराइट, बट ही इज सो स्लो. ही इज नॉट गुड एसेट इन द फील्ड. ही इज अ लायबिलिटी इन द फील्ड. आप बाबर को ऊपर प्रमोट करो. लेट बाबर और रिजवान कम इन ओपनिंग. इफ यू वांट टू सी एक्सेलरेशन फ्रॉम बॉल वन, आई वुड से रिजवान एंड अब्दुल्ला शफीक को भेजो. या चलो आप फखर को भी ला लिए फॉर अब वर्ल्ड कप की स्क्वाड में तो खिला लो, बट यू नीड समवन टू एक्सेलरेट फ्रॉम बॉल वन एंड समवन टू कंट्रोल द इनिंग्स फ्रॉम बॉल वन. ऐसा पार्टनरशिप बनता. आप दोनों ही सुकून में बैठेंगे, फिर आउट हो जाएंगे, फिर बाबर आके he'll have to build the whole thing. जैसे आज भी उन्हें साकिब क्या बड़ा गलती कर रहा मालूम, ये वर्ल्ड कप में महमूदुल्लाह जो फिनिशर बोल के आगे नहीं प्रमोट कर रहा भाई. ही शुड हैव कम बना 2 डाउन 3 डाउन. ही इज इन फॉर्म. आप शंटो वंटो ठीक है, मगर ब्रो महमूदुल्लाह इज इन गुड फॉर्म. पुट हिम एट नंबर 4 हसन मिराज को काफी प्रमोट कर दिया वाला. उसको ओपनिंग भिजा दिया एशिया कप में. ये वो कर रहा उन्हें. व्हाई आरंट यू महमूदुल्लाह, योर सीनियर प्लेयर, व्हाई यू ओनली गिविंग हिम वन पोजीशन कि खाली आप फिनिशर है. जब मैच खत्म है आप उसको लेके आ रहे हैं. अगर उन्हें नंबर 4 5 पे खेला, यू नो, गिव हिम द मोस्ट डिलीवरीज टू फेस and try to make the most of it. आपको मालूम है अच्छा प्लेयर है, एक्सपीरियंस है, शॉट्स है उसको, तो make the most of that. बिल्कुल. आई थिंक यही है कि भाई कैप्टन्स नीड टू अंडरस्टैंड देयर प्लेयर्स करेक्टली. एंड देखो बांग्लादेश की भी कैप्टनसी में काफी चेंज. देखो लिप्टन बन गया था कैप्टन. लिप्टन T20 में था, फिर एकदम शाकिब को ला लिया वापस. तो दीस शफलिंग्स आर देयर. एंड अगेन बांग्लादेश की तो कोलैबोरेट पूरे टीम को ले लिया आप, तो दे आर नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल. वो सबसे बड़ी तस्कीन कहाँ है? तस्कीन आई थिंक इंजर्ड हो गया था. ही डिड बोल इन द फर्स्ट. ही इज गुड मैन. या ही इज वेरी गुड. 140 प्लस डाल लेता उन्हें, बट अगेन आई डोंट नो कंडीशंस के हिसाब से. मे बी शरीफुल मूवमेंट ला ले रहा थोड़ा, एंड मुस्तफिजुर अगेन वो he can be economical. But it's more of the batting for me rather than anything else. Like batting needs to step up by a mile for Bangladesh, and this has not been one of the best days for them right now. South Africa on the other day look brilliant, look much more stronger with each game that's going. Even the Netherlands what a team man, the Protea fire by South Africa. Unfazed दिखे, unchanged दिखे, mentality unchanged. When I say Marco, you say Polo. आप अपना template लेके चलो. That is something that we. और हाँ, and look, it can backfire. मगर मजा तो आ रहा है, राइट? जब खेल रहे, जब परफॉर्म कर रहे हैं उन लोग, यू आर एंजॉयिंग वाचिंग देम प्ले. कि भाई क्या मार रहा. जो लोग क्रिकेट भी उतना नहीं देखते, उन लोग भी बोलते हैं कि भाई व्हाट इज दिस हिटिंग, इट्स समथिंग रिमार्केबल. एंड यू नो देयर बॉलर्स आल्सो, ओके ठीक है, डेथ ओवर्स का बोले, मगर दे बॉलिंग वेल मैन. दे भाई 5-6 विकेट उखाड़ दिए. दे किल द मेन स्पिरिट ऑफ द टीम. हो गया. दे आर प्लेइंग प्रॉपर. दिस न्यूज़, एंजेलो मैथ्यूज इज बैक. एंजेलो इज बैक. पतिराना के लिए. अच्छा पतिराना के लिए. हां पतिराना. मिस्टर एंजेलो मैथ्यूज ब्रो, दिस गाय इज नॉट रिटायरिंग. खत्म उन्हें अच्छा खेल रहा था. टेस्ट क्रिकेट में भी आई थिंक एक आध 2 सेंचुरी मारा बीच में. हाउ ओल्ड इज ही? आई थिंक 36 37. रोहित शर्मा के एज का है. एंजेलो. तो एंजेलो इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एडिशन, एंड अगेन एक्सपीरियंस कैप्टन है, तो ही माइट आल्सो डू कैप्टनसी. आई डोंट नो क्या सिचुएशन के हिसाब से उसको लेके आए, बट पतिराना I think leaking a lot of runs also, inexperienced. भाई बहुत यंग है उन्हें. उसको 19 साल का है. उसको 50 ओवर का गेम खेल रहे. उन्हें T20 से आया सीधा. उसको उतना फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिलाया. टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट लाइक वी मेंशन अबाउट द अदर प्लेयर्स. ही आल्सो हैज टू थोड़ा सा ग्रूम करो. ठीक है, धोनी यूज करा उसको, मगर T20 में यूज करा. दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट. आई थिंक इज अ वेरी टैलेंटेड बॉलर, बट स्लोली he's only 19 18. He's playing under 19 cricket just like a few months ago. There was another 18-year-old who caught our eye. He's killing it as well. Yeah, too good. तो ये pitches पे खेल के he has a very good head on his shoulders. And भाई नूर अहमद टू गुड बॉलर था यार. I think that's an exception in the out of the box or something, because even him, he's playing mostly T20 cricket. मगर उन्हें जो कल खेला अगर वही ना स्पिनर के लिए, तो I don't think फर्क पड़ेगा यार. नहीं फर्क पड़ता. आप देखो शादाब is a much better bowler in T20s because they try to go after him. नूर अहमद is beating the batsman. उन लोगों को समझ में नहीं आया भाई कहाँ पड़ रही बॉल, किधर टर्न होगा, क्या होने वाला है. They would, so that is this guy is a class bowler. There's a big difference. T20 में उन्हें गुजरात टाइटंस के लिए करा, मगर कल जो करा उन्हें, that showed me this guy is highly talented. Yeah, highly talented, and yeah, I think that pretty much wraps it up.
एंड या आई थिंक साउथ अफ्रीका मेरे को भी शॉक कर दिया। Marco Polo, baby. Andre Klassen. Went into Kock. बहुत जबरदस्त यार ये टीम। आई होप दे गेट टू baby. न्यूजीलैंड, Welcome to Africa. इंडिया, What सोचो इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका करंट फॉर्म इन द टॉप 4 टू। आपको गाना गाना है because आप believe नहीं कर रहे ना मेरे में। मेरा वो फेवरेट वर्ल्ड कप 2003 Waka waka samana mana it's time for Africa. Bro, yeah. it's time for Africa, man. It's The time for chokers are going to Africa. unleash they're going to do the choke slam and unleash the tag, baby. Let's see, अभी तो Let's आगे go. देखते हैं। कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस My wicket keeper. Australia versus नेदरलैंड्स है, उसके बाद फिर श्रीलंका एंड इंग्लैंड है, एंड उसके बाद इंडिया इंग्लैंड नहीं, उसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका फ्राइडे को, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका फ्राइडे न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान नहीं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया है सैटरडे को। खैर हम टाइम टेबल देखे Big गेम्स कमिंग एंड दिस इज गोना बी द वीक जहां पे आपको मालूम होगा कि टॉप 4 कौन होंगे आपके साथ। तो जुड़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मौके से जगते रहिए एंड कीप वाचिंग चेसिंग द टारगेट। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you.